Hello everyone. So today we are going to discuss the topic that is electromagnetic induction. This is the one of the most important discovery of Michael Faraday, which concluded that whenever there is change in the magnetic field, it produces electricity. There is change whenever there is change in the magnetic field, it produces electricity. And in other words we can say the Faraday है जो उसने electricity produce की थी from the magnetism, and this phenomena is said to be electromagnetic induction, right? So how the electric current can be produced by the magnets or magnetic force, this we will understand with the help of few activities. So first activity is that we will take a galvanometer. Let me tell you that galvanometer is a device which is used to detect the presence of electric current. So whenever there is a presence of electricity, it shows the deflection of the needle. So this is how it is used over here, and one coil which is connected to the galvanometer, and one bar magnet is there with the north and south pole. So when this magnet is brought closer to the coil, right, when it is brought closer to the coil, during that motion of the bar magnet, there is deflection in the galvanometer needle. So there is deflection in the needle, you can see here. जब ये पास आती है तो the deflection is shown by the galvanometer, which shows that electricity, that current is produced or induced due to the relative motion of the bar magnet, right? So when the north pole of the magnet is moving towards the coil, the galvanometer shows some deflection. This means the current is flowing in the coil, right? In the same way, जब इस बार मैग्नेट को वापस लेके जाया जाता है in the its original position, then also it shows the deflection. So this is due to the induced current. जो deflection है वो आती है, और वो induced current किससे आता है? Due to the potential difference that is developed across the coil. वो कहाँ से coil पे बनता है? That is due to the motion of the magnet, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं. ऐसे नॉर्थ पोल पे ज़्यादा होती है, जितना दूर ले जाएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, ड्यू टू विच देयर विल बी वेरी लिटिल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. सो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आती हैं एंड दे चेंज, मीन्स मोशन में होनी चाहिए उस टाइम पे, ओनली देन देर इज़ डिफ्लेक्शन. ऐसे नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हम बिल्कुल पास ला के भी रख देंगे मैग्नेट को, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होगी ना अराउंड द मैग्नेट, but it should be in motion at that time, only then they produce a potential difference. This induced potential difference is said to be induced EMF भी इसे बोलते हैं, जिसकी वजह से induced current है जो वो flow करता है in the coil. Clear? Now what is the reason for this induced current? It has been observed whenever there is change in the current, number of magnetic field line, this I have already explained, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, दैट इज़ व्हेन एवर द बार मैग्नेट इज इन मोशन, देन देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, एंड जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल. क्लियर? सो इन द अबव केस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल इंक्रीजेज. ठीक है, जब हम नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, दैट इज चेंज हो जाती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, देन देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल. अगेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स टू द कॉइल चेंजेस. दिस इन द अबव केस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेज. जब हम उनको बाहर चेंज करके आते हैं, मीन्स चेंज करते हैं, दैट इज मैग्नेट को हम वापस लेके आते हैं टू अवे फ्रॉम द कॉइल, magnetic field line change होती है, then again it shows deflection in the opposite direction. So also ज़रूरी नहीं है कि there should be always a motion of bar magnet. हम coil को भी move कर सकते हैं, whereas keeping the bar magnet in the stationary condition. Clear? This is also how we can produce the electric current. Clear? Next comes the activity 2, that is we have two copper coils हमारे पास हैं, that is coil 1 and coil 2, and coil 1 is connected to the battery and there is a switch. When the switch is turned on in the first case,
जिसकी वजह से जो यहाँ पे यू कैन सी इट वर्क्स एज अ सोलेनॉइड एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स द कॉइल टू ऑल्सो, जिसकी वजह से देयर इज चेंज इन द magnetic field lines over across coil 2, जिसकी वजह से there is induced EMF produced which induces the current in the circuit and the galvanometer shows the deflection. So this is it in this case, right? One more thing to be noted is that more the number of magnetic field lines, misconception होती है कि जितनी number of magnetic field lines होंगी उतना ही करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. जैसे कि नॉर्थ पोल के जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल पड़ा है नियर द कॉयल, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. नो, देयर शुड बी मोशन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट जिसकी वजह से वो चेंज होएंगी. इफ़ देर इज़ चेंज, जितना ज़्यादा वो चेंज होएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही जो इंड्यूस्ड करंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. The induced EMF and induced current do not depend upon the total number of magnetic field lines, rather it depends upon the rate of change of magnetic field lines. कि एक particular टाइम में कितनी magnetic field lines हैं जो वो change होती हैं. That is. So from this, the Faraday concluded that is, first is the change in the number of magnetic field lines through the loop produces an EMF, and this induced current is in the लूप. मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो दैट इज जब वो चेंज होती हैं ड्यू टू विच व्हेन देयर इज ऑलरेडी, जब चेंज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द कॉयल और द मोशन ऑफ द मैग्नेट और बोथ, तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट इज देयर इन द सर्किट. Next is the magnitude of induced EMF and induced current depends upon change in number of magnetic field lines through the loop with respect to time. That is, जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर?